After years of investing experience, I'll be sharing a lot of things which I've learned recently. And the most important thing which I've learned is load up truckloads of quantity in your portfolio for the companies which are having very high conviction. एंड व्हेन आई से दिस मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है रिसेंटली अपने पोर्टफोलियो में, जहाँ जहाँ मेरे पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा पैसा बना है, द स्पेस स्पेसिफिकली हाईएस्ट एलोकेशन कैटेगरी. एग्जाम्पल तरीके से अगर हम देखें तो ONGC में आज से कुछ समय पहले मेरा सबसे ज़्यादा एलोकेशन हुआ करता था, एंड आई बुक रियली ग्रेट प्रॉफिट्स ओवर दैट. आई बॉट एट समथिंग 60s एंड बुक प्रॉफिट्स एंड 180. And it was one of the largest, I can say it was the largest allocation in my portfolio. Recently I have started adding ITC since past 2 years, and right now ITC is giving me decent profits in my portfolio. And when I see ITC, again the same thing which is happening, I was very much confident about the business and I loaded truckloads of quantity. तो सबसे पहला लर्निंग अपना आता है कि अगर कोई बिज़नेस आपके पास में आया हुआ है जहाँ पे उसके वैल्यूएशन काफ़ी अंडर वैल्यूड है, बिज़नेस भी काफ़ी बढ़िया है और क्वालिटी बिज़नेस है, तो सबसे बड़ी लर्निंग यहाँ पे मैंने रिसेंटली लर्न की है कि डोंट लिमिट योरसेल्फ. हम क्या करते हैं ना, यूजुअली 5% 10% ऑफ पोर्टफोलियो का क्वांटिटी लिमिट कर देते हैं, बट इन ITC आई वेंट ऑल अवे समथिंग 15-20% ऑफ माई पोर्टफोलियो साइज. एंड आई कैप्ट बाइंग. सेकेंड लर्निंग है कि आई कैप्ट बाइंग. मैंने बाई करना स्टार्ट किया था समथिंग 220s के आसपास इन लेट 2019 अर्ली 2020, एंड आई बॉट वे डाउन समथिंग 140s तक इन कोविड क्रैश, एंड आई अगेन बॉट वे अप इन 160, 180, 200, 220, 260 पे भी रिसेंटली मैंने ITC में बाई किया हुआ है. And my average buying is something around now 200 rupees. The stock is trading something at 330s or so. And in this particular time frame, meanwhile I have received dividend of roughly 35-36 rupees on average per share. So it has already been a kind of multi-bagger for me. So second learning ये है कि average ऊपर करना start कर दो. I usually don't average on the downer side much, but मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया, दोनों चीज़ कॉमन था ONGC एंड ITC में. फर्स्ट इज़ हाईएस्ट एलोकेशन इन माय पोर्टफोलियो, सेकंड इज़ आई केप्ट बाइंग ऑन द अपर साइड. सो जब जब स्टॉक का प्राइस बढ़ते गया, लोग यूजुअली क्या करते हैं, स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो लोग रुक जाते हैं. दो आई केप्ट ऑन बाइंग समथिंग एट 260s टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि आई वॉज नॉट मच कंफर्टेबल by accumulating ITC because 20% of threshold limit in single company को cross almost हो चुका है. So that is also called as pyramid investing, pyramid averaging up, जहाँ पे जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ता है you keep on increasing your allocation. So that's the thing, and I am personally holding ITC as of now in my portfolio or something a target of 1400 in next 5 to 7 years. That is a very long time frame for many people. तीसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि मार्केट आपको रिवॉर्ड तब करता है जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो और जब आप ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हो, और यूजुअली व्हेन द सिचुएशन इन मार्केट इज अनकंफर्टेबल. एंड व्हाट डू यू मीन बाय अनकंफर्ट? आपने रिसेंटली देखा होगा कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, काफ़ी सारे लोग घबरा गए थे एंड पीपल वर नॉट कंफर्टेबल टू ऐड न्यू फ्रेश फंड्स इन देयर पोर्टफोलियो. I think that was the best time because nobody was touching quality shares and stocks were falling like anything. Same happened in COVID. Companies like Reliance, HDFC, they went into lower circuit. And this is the point of time when most of the people and most of the market is uncomfortable, where the market comes and rewards you. Because it's very easy when markets are going up, everybody is enjoying the party and you keep on buying the shares. But it's very
difficult and uncomfortable when market is falling, it's hitting lower circuits, and then you are a kind of brave heart goes ahead and buys shares of a company. And मैंने ऑब्जर्व किया ITC and ONGC, where these two companies in COVID crash, I went ahead and accumulated bravely. इवन दो आई वॉज वेरी मच अनकम्फर्टेबल, बात ऐसी चल रही थी कि ONGC का दाम जो है 60 से 30 रुपये हो जाएगा, एंड ITC जो 140 हो गया था, लोग कह रहे थे कि इट विल गो इन डबल डिजिट, दैट इज 90-95 के आसपास जाएगा. इट वॉज काइंड ऑफ वेरी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन, एवरीबडी वॉज इन पैनिक, एंड उस सिचुएशन में जाके मैंने ये दो कंपनीज के स्टॉक्स बाई किए थे इन डिसेंट क्वान्टिटीज, एंड थैंकफुली 2 years down the line both are multiplier for me. So that was the third learning. Market gives you more money when you are in uncomfortable situation. Same happens on the upper hand. Though I am not a believer of short selling, but जब market पागल हो जाता है, crazy rally आती है, तो when you sell at top, short sell करते हो, that is also a kind of uncomfortable situation. क्योंकि वहाँ पे आपका जो दिल है वो घबरा जाता है कि मार्केट और ऊपर बढ़ते गया तो क्या होगा, आपको अपना शॉर्ट्स काटना पड़ेगा. एंड दोज हु ट्राइड टू टाइम मार्केट एंड गॉट इट करेक्ट इन August 2021 and October 2021 made kind of decent money by shorting the market and making 20-25% returns in matter of 6 months. That is again a evidence of making money in uncomfortable situation. And last but not least is markets behave extremely and wildly volatile. मार्केट में मार्केट जो है वो एक्सट्रीम्स में जाता है. अगर आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, आज तो वो घड़ी आती नहीं है, बचपन में हम वो पेंडुलम वाली घड़ी देखा करते हैं जहाँ पे पेंडुलम लेफ्ट से राइट जाता था, पूरा राइट से फिर वापस से लेफ्ट जाता था, वो बीच में रहता नहीं था. और जब भी वो लेफ्ट में जाता था तब पूरा लेफ्ट में जाता था ऊपर तक, और जब भी वो राइट में जाता था नीचे से पूरा ऊपर तक राइट में जाता था. एंड आई एम श्योर दोज पीपल हु आर अबाउट 25-30 एज, दे कैन इमेजिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एंड सेम हैपेंस विथ मार्केट. मार्केट का जो पेंडुलम है वो कभी भी इक्विलिब्रियम पे टिकता नहीं है, कभी भी स्टेबल नहीं रहता है. वो जब मार्केट ऊपर जाता है तब काफ़ी ऊपर चले जाता है, जब मार्केट नीचे जाता है तब काफ़ी नीचे चले जाता है, मतलब एक्सट्रीम रैलीज आती है. एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड व्हेन मार्केट इज इनटू एक्सट्रीम रैलीज, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. जब कोविड का एक्सट्रीम रैली आया था, मैंने बोल्डली लोगों को बोला था कि दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल, दिस फॉल इज़ गोइंग टू बी अनसस्टेनेबल. मैंने चार्ट भी ड्रॉ करके शेयर किए थे अपने टेलीग्राम चैनल पर कि 7,800 पे जो फॉल आया था निफ्टी में, दैट इज गोइंग टू बी अनसस्टेनेबल, एंड वी सी मार्केट इज समथिंग एट 17,000 नाउ. तो तकरीबन 10,000 पॉइंट का रैली आ गया. एंड अ ग्रेट एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस एक्सट्रीमनेस इज साइक्लिकल स्टॉक्स. आप कोई भी साइक्लिकल स्टॉक देख लो, जब एक डाउन साइकिल आता है, साइक्लिकल स्टॉक एकदम टूट के चकनाचूर हो जाते हैं सारे शेयर्स. आप मेटल कंपनीज उठा के देख लो, वेदांता 60-65 रुपीज़ का दाम हो गया था इन कोविड, एंड जब साइकिल उठी तो वही शेयर 60-65 का तकरीबन 350-400 रुपये हो गया. एंड अनदर एग्जाम्पल, ग्रेट एग्जाम्पल इज ऑफ ग्रेफाइट. इफ एनीबडी यूज्ड टू ट्रैक ग्रेफाइट वे बैक इन 2016-17, ये शेयर चला करता था 100 रुपये के आसपास. फिर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में ऐसी रैली आई, ऐसा सेल्स बूम इंक्रीज हुआ कि पूरा ग्रेफाइट मार्केट बिकम वेरी हॉट एंड बुलिश. सो ग्रेफाइट, HEG, रेन इंडस्ट्रीज, ये सारे शेयर्स ऐसे दौड़े कि देयर इज नो टुमारो. एंड द स्टॉक ऑफ ग्रेफाइट, आई रिमेंबर इट वेंट फ्रॉम समथिंग 100 to 900,000 रुपीज इन मैटर ऑफ अ ईयर, सिंगल ईयर. सेम हैपेंड विथ HEG. 350 रुपये का स्टॉक था, 5,000 रुपये हो गया था एक साल के अंदर. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल मेड अ बिग मिस्टेक वॉज, जब शेयर का दाम 900 हो गया, लोग सोच रहे थे कि ये अभी और ऊपर जाएगा. जब एक्सट्रीम पे चल रहा था ना शेयर का दाम, पीपल थॉट इट्स गोइंग टू गो फर्दर,
and most of the people checked in at 900. So जब market extreme होता है, people get carried away and FOMO आ जाता है, fear of missing out, people start buying. And the same stock after 2017 जो उसने एक टॉप बनाया था समथिंग 1000 के आसपास, it went to 150 rupees during COVID crash. And you can see the extreme market usually shows 100 रुपये का स्टॉक 1000 चले गया था एक साल के अंदर, वही स्टॉक वापस से 2 साल के अंदर 1000 से 150 रुपये आ गया था. एंड अगेन राइट नाउ in 2022 the stock is again up from 150 to something 450 or 500. So still it's not like people didn't made money. The point of giving this example is when market reacts extremely, it reacts very extremely. 150 रुपये में भी लोग लेने तैयार नहीं थे. ग्रेफाइट का स्टॉक जो था वो लोअर सर्किट में अटका पड़ा था, और जब 1000 रुपये पे अपर सर्किट लगी थी तब लोग पागल के ऐसे लाइन लगा के खड़े थे. 150 में लोग लाइन लगा के बेचने के लिए खड़े थे. दैट इज समथिंग वेरी फनी अबाउट द स्टॉक मार्केट. बट द थिंग इज दैट दोज पीपल हु बॉट द कंपनी एट लेट्स से 100, 150 and they held on with patience, digesting all this extreme volatility from 100 to 1000 and 1000 to 100 and then again 450. They really made money despite all the gyrations that we had. That what market teaches us कि market जो है वो extreme behave करेगा. We don't have to get carried away. जब market भाग रहा है तब carried away होके FOMO में मत आओ, और जब market गिर रहा है तब फेयरफुल होके पैनिक सेल मत कर लो. ट्राई टू मेंटेन योर इक्विलिब्रियम. अपनी जो मेंटल सेननेस है उसको मेंटेन करके अगर हम चलते हैं मार्केट में, देन वी आर इन पोजीशन टू मेक ग्रेट मनी. सो दिस वीक्स लर्निंग आर 4 key learnings from my personal experience. First is load up truckload of quantities in the companies which you are having a lot of confidence. Averaging way up, which is also known as pyramid investing, pyramid averaging. Third is market gives you more opportunities as well as makes you more money in uncomfortable situation. And fourth is markets usually behave wildly and rise and fall extremely during high period of volatilities. So try to maintain your saneness, try to maintain your calmness, and make decision with a calm mind rather than getting carried away. So these are some 4 key learnings. Next week I'll be again back with few of the key learnings I am learning these few days from the stock market, and would share the same with all of you. Till then, goodbye and take care.